Good afternoon, everyone. Welcome back to the IPSC Visual Art Fest 2022, Hum Ek Hain. I am sure that all of you are enjoying each and every moment of this fest. We are here to showcase the next three events: outdoor landscape, digital poster making, and POP relief work. Jawaharlal Nehru said, "The art of a people is a true mirror to their minds." How fortunate we are that we got this opportunity to see these budding artists discovering and revealing themselves through their masterpieces. It is matter of great pride for us to have Mr. Vinod Patel among us today. A highly acclaimed painter, Sir is the director of A1 Children Art Activity Ahmedabad. He has established himself in the art community. An active member of Bombay Art Society and the Gujarat Visual Art Association Ahmedabad. Sir is a promoter and pioneer of the Indian art. He is a proud recipient of nationally acclaimed awards like the Sanskar Bharati Art Award, Devgarh, Rajasthan, the Eastern Foundation of Art National Award, Odisha, the Gujarat State Lalit Kala Art Academy Award, Ahmedabad, the South Central Zone Cultural National Award Center, Nagpur, the Agnipath All India Art Competition, Artist Forum Best Teacher Award, Gandhinagar, to name a few. We are blessed to have your esteemed presence amongst us, sir. It is my pleasure to introduce to the gathering our next judge, Mr. Jay Ranjit. Sir is the Associate Director of Student Experience and Faculty, first year studies at ISDI School of Design and Innovation. A self-taught artist with a practice spanning 15 years with a career in art and design education for the last 13 years. Sir is a painter, printmaker, photographer, writer and experienced designer with a specialty in workshops. With 20 plus solo and group shows in Mumbai, Delhi, Indore, Bangalore and Baroda, he recently exhibited his work in the USA. Now the co-founder of Fluxus Chapel, an art library activity space in Mumbai, he continues his journey of bringing art to people in new ways. He received the honor of Outstanding Leadership in Education at Education 2.0 Conference in Dubai in March 2022 for his long-standing contribution to the field of art and design education. A hard-working and high-achieving artist, his most valuable trait is his dedication to his craft. Thank you, sir, for blessing the participants today. It is our honor to welcome our next judge, Ma'am Bhavna Basumati, to the fest. Ma'am worked as a craft teacher at Mayo College Girls' School, Ajmer from 1998 to 2013. A Bachelor in Fine Arts, Sculpture from Vishwa Bharati University, Shanti Niketan, Master in Fine Arts, Ceramic Design. At present, she is pursuing her PhD at Vishwa Bharati University, Shanti Niketan. A renowned artist, she held numerous exhibitions of high acclaim, such as the Continuous Stream, Kala Bhavan Connect 3D virtual exhibition by Hyderabad Literary Festival. Remembering Dinkar Kaushik, a group show at Birla Academy of Art and Culture, Kolkata. Nandan Art Gallery, Shanti Niketan. And modern sculpture at Jawahar Kala Kendra, Jaipur. An expert in her field, she has participated in various seminars such as International Web Symposium on International Media and COVID-19, Challenges for Journalists and Educators, organized by Institute for International Journalism, Ohio University, USA. In 2020, she was invited as a resource person to present a paper in the national webinar on Healing Power of Arts, organized by the Department of English, Sophia Girls College, Ajmer, Rajasthan. A proficient resource person, she has lectured on topics like locus of ceramics in art education, expounding ceramics, and creative configuration expanding Indian experience, sponsored by UGC New Delhi.
A multifaceted artist, at present she is the assistant professor at Visva Bharati University, Shantiniketan, and vice principal at Kala Bhavan, Vishwa Bharati University, Shantiniketan. Ma'am is the perfect blend of skill and sophistication. Welcome, ma'am. May I now request Kanak to describe our next event? Thank you, Gauri. Someone rightly said, in a world of constant change and streaming technology, I find solace in the forest where a tree remains a tree. In our third event of the day, Outdoor Landscape, participants portrayed mountains, trees, rivers, and created something out of the world. I now invite Mr. Vinod Patel to enlighten the gathering with his words of wisdom. Friends, मेरा नाम विनोद पटेल है. I'm an artist from Ahmedabad. आज जिस तरह से मैं बताना जा रहा हूँ कि वाटर कलर लैंडस्केप जो है ना, उसके अंदर किस तरह से काम करना चाहिए. पहले बेसिक तो एक नॉलेज होना चाहिए, जैसे एक मटेरियल की उसका एक डिसिप्लिन, उसका आउटपुट कैसे आना चाहिए, उसके बारे में एक नॉलेज होना चाहिए. हम लोगों ने पहले बहुत बड़े बड़े स्केल में काम करते थे, मगर बड़े बड़े स्केल में काम करने की ज़रूरत नहीं है. पहले की स्केच करना सीख लो. मगर की स्केच करने के लिए पहले ट्रैवलिंग स्केच, जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग स्केच, छोटे छोटे लैंडस्केप करो, फिर बाद में साइज को बढ़ाते जाओ. आप देखेंगे वीडियो में जिस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. और उसके अंदर पहले सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए. लोग फुल पिक्टोरियल कंपोजिशन लेते हैं, तो पहले वाटर कलर लैंडस्केप के लिए सी स्केप करना चाहिए. जैसे जमीन और स्काई को अलग करना चाहिए. तो अलग मतलब कैसे? तो जैसे स्काई और ज़मीन को अलग कलर पर्सपेक्टिव से, तो पहले कलर पर्सपेक्टिव के साथ खेलना चाहिए और कलर को पहले अप्लाई करना सीखना चाहिए. फिर वन बाय वन आपको पिक्चोरल कंपोजिशन की तरह सब्जेक्ट डालना चाहिए. जैसे सी स्केप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बोर्ड डाल सकते हैं, एक फिगर डाल सकते हैं रिवर साइड पे. तो इसी तरह आपको काम करना है. तो आप आइए देखिए मेरे डेमो में, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से काम करना चाहिए. तो जैसे अब मैंने आपके आगे बताया कि भी फर्स्ट टाइम पहले तो एक मटेरियल की किट वो प्रॉपरली होनी चाहिए. जैसे बड़े स्केल में काम करना तो बड़ी प्लेट हो, जैसे ब्रश, छोटी पैलेट, जैसे बाउल, ब्रश, पेपर, स्पंज, व्हाटएवर XYZ, जो मटेरियल आपको जो सामने दिखता है वो ज़रूरी है पहले. और ये जो ट्रैवलिंग बुक है जो दिखती है वो चीज़ हम कभी भी कई बार जाते तभी एक किट लेके चलते हैं. जैसे छोटी ड्राइंग बुक से क्या फ़ायदा होता है, वो तो पहले ट्रैवलिंग बुक होनी चाहिए. जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे लैंडस्केप के लिए छोटी 132 पार्ट्स छोटी सी ट्रैवलिंग स्केच बुक, इससे बड़ी. पहले छोटे स्केल में काम करो, फिर बड़े, फिर इसी तरह आप बड़े स्केल में काम करो. आप अभी ये डेमो देख रहे हो, उसके अंदर आपने देखा कि जैसे ज़मीन और स्काई दोनों को अलग करना है, तो किस तरह से अलग करना चाहिए. तो हाउ टू अप्लाई, कलर को अप्लाई करना है तो कैसे करना चाहिए वो देखिए. इसी तरह दो पार्ट को अलग करो, ज़मीन और स्काई, मतलब सी स्केप. जैसे दरिया है तो दरिया के पास बैठ के वाटर और स्काई दोनों का जो मूड होता है उसके अंदर जो कलर दिखते हैं, तो उसी तरह आपको अप्लाई करना है. जैसे आप लेफ़्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ़्ट हो, तो आप बाएं हाथ से काम कर रहे हैं या राइट हैंड तो कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको मटेरियल भी इसी तरह साइड में रखना चाहिए कि राइट साइड पे रख लो तो एक ग्रिप रहती है.
जैसे अब आप देख रहे हैं उसी तरह जैसे मैं छोटे छोटे ब्रश को भी यूज़ करता हूँ और कलर को डायरेक्ट मिक्सिंग करता हूँ। तो इसमें अंदर 20% पानी कैसे लेना चाहिए और किस तरह से कलर को स्ट्रोक्स लगाने चाहिए, ये जो चीज़ें ना सब पहले ऑब्जर्व करो। कोई किसी का डेमो देखो ना तो आप पहले ऑब्जर्व करो कि आर्टिस्ट किस तरह से काम करता है। आर्टिस्ट की एक बेसिक जो बात होती है तो कलर की अप्लाई करने की जो रीत होती है ना, उनकी एक जो मेथड होती है वो मेथड को फॉलो कर फिर आप ट्राई करो। लोग हैं ना उसको ऑब्जर्व नहीं करते, सीधा काम करने चले जाते हैं। मगर काम करने से पहले ब्रश, पानी, कलर कितना प्रोपोर्शन में लेना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से ब्रश को हैंडल करना चाहिए, ये आप जो देख रहे हैं उसी तरह आपको काम करना चाहिए। और फिर बाद में आपको लगे कि कंपोजिशन में कुछ डालना है, जैसे बोट दिखती है, जैसे एक फिगर दिखता है, तो प्रॉपर्ली उसका एक स्टडी होना चाहिए। पहले बहुत सारे लाइन ड्राइंग करना चाहिए, फिर उसका एक ग्रामर होता है, हर एक की एक पर्सपेक्टिव होती है, हर एक फॉर्म की एक ब्यूटी होती है। तो पर्सपेक्टिव के साथ वो फॉर्म को किस तरह से डालना चाहिए, तो उसी तरह आपको ये पहले देखने के बाद ट्राई करना चाहिए। सीधा ट्राई करने हम चले जाते हैं तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि भी फिगर है तो फिगर का शेडो किस तरह से डाला मैंने, तो आप जैसे कलर की जो कॉर्नर है, जो हाईलाइट जो सी स्केप है, तो वो पेपर को छोड़ना है तो एक वेव्स दिखता है माउंटेन। तो माउंटेन जैसे ही स्पॉट पे जाके हमको जैसे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन पे जाके ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ना चाहिए। मतलब एक वैली हो या एक 1.3 पर्सपेक्टिव हो जहाँ पर आप देख के माउंटेन को अलग करना है कलर से। तो वैसे ये सब्जेक्ट के साथ काम करना चाहिए। ज़्यादातर हम ट्रैवलिंग काम करते हैं, ट्रैवलिंग करो तो अच्छा रहता है, क्योंकि लैंडस्केप के बहुत सारे मूड होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इसमें समर, विंटर, मानसून, तो उसको ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। स्काई में बहुत सारे कलर हैं, मगर कलर की जो बात आती है उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव होता है। तो कलर की पर्सपेक्टिव के अंदर जैसे ब्लू है तो ब्लू के कितने शेड है, ग्रीन तो ग्रीन के कितने शेड है, उसको 1 by 1 अप्लाई करो तो पता चलेगा। ज़्यादातर ब्लू कहाँ दिखता है, ज़्यादातर ग्रीन कहाँ दिखता है, ज़्यादातर येलो कहाँ दिखता है। और जैसे सब मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर में कैसे कलर दिखते हैं, उसी तरह सब्जेक्ट लेके, जैसे माउंटेन सब्जेक्ट लेके आपको कंपोजिशन में काम करना चाहिए और उसके साथ कलर के साथ खेलना चाहिए। आप छोटी सी स्केचबुक रखो और कलर, छोटी सी पैलेट, छोटा सा बाउल। ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल की किट, वो पहला डिसिप्लिन है। ब्रश को अच्छी तरह से पहचानो, ब्रश कैसे ब्रश काम करते हैं, कैसे ब्रश को अप्लाई करना चाहिए, कैसे कलर पानी लेना चाहिए, कैसे ड्राइंग करना चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं वो नॉलेज होना जरूरी है। वो जो हम परमानेंट करेंगे ना तो शायद आप वाटर कलर में सक्सेसफुल जाएंगे। बाकी तो आप पीछे देखेंगे, जैसे मेरे बहुत सारे लैंडस्केप हैं, मैंने छोटी छोटी स्केच बुक में काम करके, ट्रैवलिंग बुक में काम करते मैं बड़ी स्केल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बड़ी स्केल में काम करने से पहले मेरे को एक बेसिक की स्केच का एक ग्रामर होना चाहिए, तो वो मैंने किया। फिर बाद में मैंने बड़े स्केल में काम किया है। तो मैंने हर एक मीडियम में काम किया है, जैसे एक्रिलिक है, वाटर है, ड्राई पेस्टल है। तो ज़्यादातर मैं ड्राई पेस्टल में काम करता हूँ, वाटर कलर में भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं करता। मगर वाटर कलर से मुझे बेनिफिट कितना मिला है और ड्राई पेस्टल से कितना बेनिफिट मिला है, वो जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे लिए बहुत एक मेरा ग्रामर बन गई थी। और मैं इसी तरह में आप काम करते करते आगे आया हूँ। तो आप भी मेरी तरह, अब जैसे मैंने बताया डेमो में और जिस तरह से आपने देखा, उसी तरह आपको काम करना चाहिए, तो आप शायद सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हाउ टू अप्लाई दिस माउंटेन कलर, तो एक वैली का फॉर्म हमने लिया, तो उसके अंदर पहले पेपर को भिगो के ऐसे कलर बना के डालने का है। तो कलर अपने आप काम करेगा।
जैसे आप देखेंगे भाई मैंने जो कलर डाला तो इसके अंदर धीरे धीरे से मूव करिए, पेपर को मूव भी करते जाइए, कलर डालते जाइए, मूव करते जाइए, तो जो क्लाउड की इमेज है ना वो अपने आप बनेगी। उसमें बार बार लगाने से कलर डर्टी हो जाता है, मगर एक बार जो कलर लगाया उसको वैसे वहीं पे रहने दीजिए। क्यों? कि जो भिगा हुआ पेपर है ना वो अपने आप कलर को मूड बनाएगा, वो कलर का एक पर्सपेक्टिव बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने जो स्ट्रोक्स लगाया राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो वो जैसे एक छोड़ दिया मैंने तो कहीं कहीं जगह पे वाइट छूट जाता है। ये वाइट जो छूट जाता है वो हाईलाइट है, तो वो भी चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे हाईलाइट छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, किस तरह से छोड़ना है, किस तरह से कॉर्नर को इंटरेस्टिंग करना है। तो ये जो चीज़ है ब्रश को बदलते जाओ। जैसे मैंने बड़ा ब्रश छोड़ दिया, अब मैं छोटा डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को अब डिटेलिंग की तरफ जाना है, तो फिर मैं अब ट्री कर रहा हूँ। तो ट्री का कंपोजिशन, ट्री का ड्राइंग, ऑब्जर्वेशन में जो दिखता है ट्री उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, तो उसको दूर है, नज़दीक है, पास है, तो वो जो चीज़ें ना पहले समझो फिर अंदर कंपोजिशन में डालो। तो आप कलर, बहुत सारे कलर हैं लाइफ में, बहुत सारे कलर हैं, मगर उसके अंदर एक मूड होता है कलर का। तो कलर का मूड जब अपने आप पेपर पर आता है ना तभी एक लैंडस्केप की इमेज बनती है। हम लोग सीधा कंपोजिशन की तरफ वाटर कलर की कंपोजिशन करते हैं ना, उसमें बहुत तकलीफ रहती है, पूरा ग्रामर नहीं सीख पाते। तो जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग लैंडस्केप का जो टाइमिंग होता है मॉर्निंग में 6 to 9 तक, 10 तक, और 10 के बाद 10 to 12 वो जो आफ्टरनून का टाइमिंग है, जो मतलब दोपहर का टाइम है, तो उसमें शेडो होता है। फिर इवनिंग का टाइम होता है, तो वो जो बातें हैं ना, तो उसी टाइम एटमॉस्फेयर के साथ कलर भी बदलते हैं। जैसे हम सनसेट देखते हैं, सनराइज भी देखते हैं और सनसेट भी देखते हैं, तो उसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 मिनट में कलर का मूड बदल जाता है। तो वो जो चीज़ें ना ऑब्जर्व करना सीखो, फिर बाद आप अप्लाई करना सीख लो। जैसे मैंने आप आगे बताया कि कलर अप्लाई किस तरह से करना चाहिए, तो आपको वाटर कलर करना है तो वाटर कलर के बारे में प्रॉपरली बहुत सारे आर्टिस्ट का डेमो देखो, तो हर एक की मेथड अलग होती है। कोई सीधा कलर से काम करता है, कोई ड्राइंग करते काम करता है, कोई पर्सपेक्टिव में काम करता है, कोई फिगरिटी में काम करता है। तो बहुत सारे लैंडस्केप होते हैं, लैंडस्केप के बहुत सारे प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का लैंडस्केप होता है। मैं तो जो बताने जा रहा हूँ, आपको जो दिख रहे हैं, आपको दिखता है वो उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जब भी कोई भी काम करो तो प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ एक धीरज और समझदारी, कलर उठाओ और फिर कैसे डालो, कलर को किस तरह से वहीं पेपर पे डालना है और कहाँ रखना है और किस प्रकार का ब्रश लेके करना है। कभी कभी लोग हम क्या कि एक ही ब्रश से लैंडस्केप करने का ट्राई करते हैं, नहीं, जब भी कोई भी लैंडस्केप करो तो बहुत सारे ब्रश आते हैं, तो ब्रश को यूज़ करो। जैसे मॉप ब्रश है, कैमल के आते हैं, मतलब जो इक्सा के आते हैं, बहुत सारे कंपनी के ब्रश आते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, आपको पहले ऑब्जर्व सीखना चाहिए, मटेरियल के बारे में जानना चाहिए। मटेरियल परचेस करने से पहले मटेरियल पे फोकस करो। जब आप मटेरियल पे फोकस करेंगे ना तो शायद अपना काम, जैसे कैमल का कलर है, जैसे विल्सन न्यूटन है, जैसे पेव्यू है, जैसे मिशन है, तो बहुत सारे जो कलर्स हैं, तो उसकी डेंसिटी, जो कलर की डेंसिटी होती है उसको ऑब्जर्व करना सीख लो। अलग अलग पेपर पे अप्लाई करना ट्राई करो। जैसे हम बेसिक ग्रामर सिखाते हैं स्कूल में, जैसे टोनल वैल्यू, कलर की टोनल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो वो जो अब हम कर पाएंगे ना तो अच्छी तरह से लैंडस्केप कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिखता है, देखिए मैंने पहले कैसे किया स्टार्ट, फिर धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ जा रहा। बीच में जो मैंने लाइट छोड़ दी, तो जो लाइट मैंने छोड़ दी है तो वो जो एक रास्ता बन गया, जैसा एक ज़मीन का पार्ट है उसके पे एक लेयर होते, मतलब कि खेत हैं, वैसे जो दिखता है आपको ट्री मैंने रखा है। तो वो जो चीज़ है ना, ये हमारे बहुत काफ़ी है। तो आप इसी तरह आप काम करेंगे ना तो शायद अच्छा कर पाएंगे। अब आप पीछे देखेंगे मेरे बहुत सारे लैंडस्केप, मैंने बहुत सारे लैंडस्केप में काम किया है। जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे
जैसे वाटर कलर है, ड्राई पेस्टल है, तो बड़ी स्केल में बाद में करो, पहले छोटी स्केल में आप काम करो, तो आप अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकते हो और अच्छा काम भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for your kind words. Now, let's witness a short glimpse of all the participants working and preparing a beautiful work of art.
Yes, ladies and gentlemen, in outdoor landscape, the young artist portrayed mountains, trees, rivers, forests and created a masterpiece. Let us have a look at their final masterwork. The artwork received was not only a scintillating depiction of nature, but was a wonder to behold. Let us appreciate art and experience the magical celebration of humanity and harmony by felicitating the following 10 awards to the participants. Creative Art Award goes to Honorable Mention Award goes to Jury's Choice Award goes to High Commendation Award goes to People's Choice Award goes to Special Commendation Award goes to Promising Young Artist Award goes to Future Generation Art Award goes to Artists Beyond the Boundaries Award goes to Best Work of Art Award goes to Please remember, all participants will receive e-certificates. Hearty congratulations to the award recipients. The other day, I saw a poster. It said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Ladies and gentlemen, this is the power of poster. A good poster is designed in a manner that is not only eye-catching but also informative and stays in your subconscious mind. In our fourth event of the day, digital poster making, the posters that we received captured the beauty, grace, senses and emotions of the artist's world.
Through their artistic, striking endeavors, they created a fascinating, detailed, unforgettable masterpiece. May I now invite Mr. Jay Ranjit to encourage and guide our participants. Hi everyone, my name is Jay Ranjit. I'm the Associate Director of Student Experience at ISD. I'm also a faculty member and I'm also an artist and designer. It's an absolute pleasure to be able to see your work, to be able to experience what you guys are up to, and to know that you have a creative mind. I'm so excited to see what you become in the future, and I'm very glad that you've chosen to enter the creative space, to be able to create things in different ways through different ideas, working with different mediums and materials. It's always a pleasure to see somebody experimenting. Now, I as an artist, I'm also an experimenter. And that's what the world needs right now. It needs somebody who's willing to think outside the box. Somebody who's willing to think and say, what's the problem and how do I solve it? So this is a great chance for you to show us what you've got, for us to see who's excited about changing the future, and and to be able to actually develop something new, to be able to create change, to be able to create something absolutely wonderful. Now, what are the roles available out there? Well, there's communication design, where you get to tell stories, you get to change how people think about things. There's product design, where you actually get to make the things that we all use, including the camera that I'm actually talking into. Then of course there is interior design, which deals with the spaces we're in. Now I love that because I get to create murals that change people's perspective of a space, their experience within that space. Then of course we have the world of fashion. It's a huge space where creativity is the number one thing that we all need to bring to the table. Something that actually changes how people consider the world, work with the world, focus on the world, and are able to change the entire perspective of how we dress for the future, what we buy, how we buy it, the experiences we give to people. I for one love it because I've gotten to experience all of these things. But we also have something called strategic design management, which is absolutely brilliant because I get to think of strategies, ways of doing things to make life much easier, much better, much brighter. And I think that's what you guys can bring to the table also. It's always great to see how you can put an idea first, to be able to consider what's out there, to be able to think about, what we can do, how to change the way we do things. But think about it. Even in making the work you did for the competition, well, you had to choose a material, you had to choose an idea, you had to think of a concept, and you did all of that with a process. That process we call the design thinking process. And I'm so glad to see all of you using it and being able to actually function with it in this manner, to be able to see that, you can actually ideate and come up with wonderful solutions. Simple things, the daily choices we make, that's where it all lies. Now, going forward in the future, perhaps design may not be the course of action that you want to take. But is it important to understand it and learn it? Definitely. Because when you work with others, you make for a better outcome. Working with a team is really important. And obviously you and your faculty members, your teachers, you work with them so well, which is why this kind of a competition could even happen, and happen in such a great manner. So I'm glad to see that all of you are participating, engaging, and working well. To the parents who might be seeing this, keep encouraging your children. It's important for them to understand and know what it is that they need to be doing, and that you are behind them 100%. To the teachers, thank you so much for making something like this happen. The kids always need something like this to express themselves, to challenge themselves, to be able to put their ideas out, and to be able to work in a creative environment. And of course, to the organizers of the competition itself, thank you so much for putting this together in such a brilliant way. So well organized, so well constructed, to be able to have the students actually function in a coordinated way, to be able to create and express. And of course, to the audiences who might get a chance to see your work in the future, well, as creators and designers, we always work for all of you. So if you want to create something interesting in the future, you know who to reach out to. This entire group of wonderful creators, these exciting new entrepreneurs of the future, the business creators, the job creators, as well as all the content creators. It's important that we nail this as we go, and the only way to do that is to keep at it. In design, we have a statement: failure breeds success.
It's not a bad thing to make a mistake. It's not a bad thing not to win. But it's more important to try to play the game fairly as much as possible, if not completely fairly, but at the very least to make sure that you're always standing with an applause for whoever does take the prize away. If we don't encourage each other, we don't get to the finish line together. So I encourage all of you to raise your hands and clap for all of you who participated in this together, for everyone who organized it, and for yourselves going into the academic and career paths of the future. With that, thank you so much, and I can't wait to see what you guys become. Thank you, sir, for your guidance. Now is the time to appreciate the efforts of our budding artist. Imagination of an artist knows no bounds. Their leap of creativity glorifies everything around and creates a vivid masterpiece. Let us delve deeper and admire the artist world of digital posters.
As I mentioned earlier, each participant discovered and released a fountain of their creativity that left us all spellbound. Let us applaud the following students for their vivid masterpieces by felicitating the following 10 awards to the participants. Creative Art Award goes to Honorable Mention Award goes to Jury's Choice Award goes to High Commendation Award goes to People's Choice Award goes to Special Commendation Award goes to Promising Young Artist Award goes to Future Generation Art Award goes to Artists Beyond the Boundaries Award goes to Best Work of Art Award goes to All participants will receive e-certificates. Congratulations to the award recipients. The fifth and the final event of the day is POP relief work. Relief carving is a great stress buster. Artists find it quite relaxing. Carving in relief stems from an old definition that means the state of being clearly visible and obvious due to being accentuated in some way. Each and every piece of art that we received had a unique style to it. Whether they carved out animate or inanimate objects, the precision and creativity was quite evident. May I now invite Bhavna Basumatri ma'am to share her valuable suggestions with these budding sculptors. Namaskar. I extend my gratitude to the organizers of the IPSC Visual Art Fest, Hum Ek Hain, Harmony, for giving me the opportunity of being a part of this celebration of art and craft. As an artist and an art educator, it gives me immense pleasure to see that there are so much of effort being put together to spread art education amongst the young minds of our country, who are the torchbearers for enhancing and preserving the legacy of rich Indian art and crafts. Today, I shall be sharing my experience as a ceramic artist about the ceramic art, which is unfortunately not as popular as painting or sculpture as an art form. Ceramic art is art made from ceramic material, including clay. There is a proof of well-advanced pottery making, both by hand and by wheel, from all over India. In Harappan civilization, potters held an important place in the society, and the craft of pottery was well advanced. Eventually, it evolved as an art form. Ceramics is one of the oldest art forms, and in contemporary times, it is not used merely for utilitarian purpose. In fact, it has become a language to express and communicate by the artists pan-India. Ceramics had its journey from being an unpopular art to a popular art form. Artists today present their concepts regarding current situations, their surroundings, emotions, and thoughts through this medium. One of the major spaces where this craft has evolved from craft to art are the ceramic studios. Hence, it won't be only fair to mention that studio potteries have a major role to play in enhancing, popularizing ceramics as an art form.
It was through the studio pottery that ceramics transformed from being a household product produced by local potters and industries to a work of art. As a result of that, ceramics is still being practiced as a medium of pure art. Apart from its utility aspect. It is a great effort ever made by the artist and a grand achievement in Indian art. Apart from the studios, schools and higher education institutions have and are playing a very important role in promoting ceramics as a ceramic art by adding them in mainstream education curriculums. Art galleries and art promoters cannot be left unmentioned and are equally contributing in upliftment of ceramic art. Ceramic art is also being used as a medium for art therapies pan-India, ranging from young children to older adults. Art therapies primarily aim to help individuals experiencing emotional and psychological challenges and achieve personal well-being. Ceramics can be widely experienced in form of ceramic sculpture, ceramics mural, and functional ceramics. While ceramics has been an integral part of the society for ages, expounding the evolution of ceramics reveals fascinating developments every time attempted at. Reciprocations as a process in industry or art and craft in terms of material and methods are inevitable and fast growing. However, like reciprocations, success and failure are also inevitable, although achievements are immense. With this, I shall like to leave you to experience some visuals of ceramic art.
Wishing all the participants all the best. Thank you and have a great day. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. We are truly indebted to you for inspiring our budding sculptors. We are in awe of the beautiful execution and detailed intricacy of each of the participants' work. Just have a look, ladies and gentlemen, how patiently they carve and how their carvings create an illusion of space and depth on a shallow surface.
And now is the time to witness and admire the marvelous creations of these wonderful sculptors. And now is the time to felicitate the following students for their stunning work of art. Creative Art Award goes to Honorable Mention Award goes to Jury's Choice Award goes to High Commendation Award goes to People's Choice Award goes to Special Commendation Award goes to Promising Young Artist Award goes to Future Generation Art Award goes to Artists Beyond the Boundaries Award goes to Best Work of Art Award goes to All participants will receive e-certificates. Congratulations to the award recipients. May I now invite Gauri Bakshi for closing remarks and instructions for the second day. Thank you, Gyanam Brahma. Art has the power to transform, to illuminate, to educate, to inspire and motivate. It was indeed a very fulfilling day to seeing our young budding artists use their creativity to put their thoughts as masterpieces of art. I would like to take this opportunity to thank His Highness Maharaja Gat Singh Ji for gracing the occasion. Our keynote speaker of the day, Dr. Raghvendra Rao H. Kulkarni, for enriching us with art. Judges, Shalini Soni Ma'am, Ram Pratap Verma Sir, Mr. Vinod Patel. I would like to take this opportunity to thank His Highness Maharaja Gat Singh Ji for gracing the occasion. Our guest of honor, Chisu Krishna Shetty, our keynote speaker of the day, Dr. Raghvendra Rao H. Kulkarni, judges, Shalini Soni Majumdar Ma'am, Ram Pratap Verma Sir, Mr. Vinod Patel, Mr. Jay Ranjit, and Ma'am Bhavna Basumatri, who have made such major contribution to the cultivation and development of artistic talent in this country. And finally, of course, I congratulate all our participating schools. I wish each and every one of you continued success in future. A future in which I am confident you will all make your own significant and creative contribution to the community, society, and above all,
your country. Albert Einstein once said, "Creativity is intelligence having fun." And the second day of the fest will give ample opportunities to our artist to have fun and enjoy in its purest form. Tomorrow we meet sharp at 8:45 am for our next 6 events: tile mosaic, doodling, collage making, cartooning, mandala, and string art. A lovely surprise, a visual drama titled Kala Chintan awaits you all tomorrow. Thank you, Gyanan Brahma.